Hello everyone, good evening, and today we'll be continuing with the part third of the dynamic programming, and today will be the last lecture of this goated DSA grind series. Okay, so we have already completed 50 days. I actually more than 50 because we had a few breaks in between for a day or a few, and so today it's the 25th lecture or the session that we are taking, and we have covered a lot of things in this series, right? So if you check um, what are the things that we covered, let's see. Okay. Yes. Okay, so 21 sessions are posted here, but the DP part hasn't been posted yet, so we'll be doing that. So yeah, we did a lot of things starting from, the introductory sessions, time complexity, arrays, vector, prefix sum, two pointers, sliding window. We had binary search, stack, linked list. Then we finally moved on to trees, non-sequentials, heap, greedy, dynamic programming. If I'm not missing something, then these are the things that we have done so far. And for 25 lectures, I guess this was a quite good amount of time that we have invested, right? Because we haven't stuck at a particular topic for long. Then we have continued moving on with a newer and newer topics, and wherever we required time, we also gave it. Like greedy had some 3 4 lectures. So Heap had some 3 4 lectures. Dynamic programming has this is the third lecture of dynamic programming. So we did give time. We had learned quite new stuffs, I guess. Even I learned things from this DSA series. So yes, with this particular introduction, let's move on and complete the last session on the GDG's YouTube live stream. Okay. So today we will have DP part 3. What we will be doing today are two questions basically. That is the longest palindromic substring. This will be the first question. One second. Yes, longest palindromic substring. Next we had palindrome sequence, subsequence rather. This was substrings, sorry, that was 647. Okay. Uh, Substrings 47, right? Yes. So these are the two questions that we'll be discussing today, and we'll be ending our part on DP. So let's see, without any further ado, let's get directly to the question. It's a very short question, and let's see what it says. So, given a string S, return the longest palindromic substring in S. Now, if you have been through the series, you know what a palindrome is. We have done quite a lot of questions on substrings, be it sliding window, be it two pointers. So you very well know what a substring is. If not, let me just give a quick recap. Palindrome means you read from start or you read from end. That is the same, right? A substring in normal terms would mean given a string, you start deleting from the leftmost or the rightmost, and whatever you or both, actually, or both, and whatever you will be left with are the substrings. Okay, so these are a substring of a particular string, like deleting 0 or a few characters, but should be in a continuous fashion from the start and the end. Okay, so that is a substring. Given in this particular example, we have BABAD. What we have to return is
the longest palindromic subsequence substring. Okay, that means कि एक particular string में palindromes हो सकते हैं. Suppose यहाँ से यहाँ तक एक palindrome है, but that doesn't mean that there are no longer palindromes. So there can be a bigger palindrome in this particular string, and this is what we need to return, right? Okay. So in this particular case, BABAD, what is the longest palindrome you see? You see in this particular substring, we have B from the start, B from the end, and A in the center, right? So this is a palindrome, and this is the longest palindrome, quite visible. So we are returning BAB. Now in CBBD, see you can check. यहाँ से यहाँ तक करोगे तो ये palindrome नहीं है, but यहाँ से यहाँ तक you have a palindrome, and hence the answer is BB, right? Um, So these are the things. One important thing, that a single character is also called a palindrome. So if these are in the string, that is just one single character. So yes, that is also a palindrome, right? So this qualifies as a palindrome. Okay, one second. Yeah. So now let's see how do we like go through this particular question. First of all, we'll be considering the brute force approach, of course. ठीक है. तो brute force approach में सोचो क्या हो सकता है कि given a string, ठीक है, suppose this is a string, this is the start, this is the end, ठीक है, इसमें पैलिंड्रोम्स खोजते हैं और फिर चेक करेंगे कि सबसे बड़ा वाला कौन सा पैलिंड्रोम है, ठीक है. ये कर सकते हैं कि suppose we get a palindrome from here to here, we get another palindrome from here to here, we get one palindrome from here to here, ठीक है, this to this to this, and this to this. So सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला, sorry, this is a big the biggest palindrome, so we'll be returning that. And now since you see these symbols, these are the same symbols, right? So what we can do is we can have that two pointer kind of a thing कि for every index you are fixing कि यहाँ I है मेरा और यहाँ पे particularly J है. अब तुम चेक करो कि इन दोनों के बीच में कौन सा पैलिंड्रोम है और सबसे बड़ा कौन सा पैलिंड्रोम है, ठीक है. फिर J शिफ्ट करना, I शिफ्ट करना, मतलब समझ रहे हो. For every possible substring you are calculating that what is the maximum palindromic substring that we can find, right? For every possible, one second. Yeah, hello. Start तो हो गया है, देखो. Hmm, okay. Yes, so for every palindromic, rather, so for every substring, you are checking whether or not palindrome exists, और हम एक आंसर रखते हैं से रेस, और इसको अपडेट करते जाएंगे जब जब हमें एक बड़ा palindrome मिलेगा. Since we do not want to waste time on brute force approach, so I have already pasted it here. This is what a brute force approach will look like. See, you are initializing the result as empty. Okay, ये चीज हम लोग return करेंगे of course, क्योंकि हम लोग को एक return string return करना है. Okay, now this is res length, that is the length of result. Okay, this is the length of the result. Okay, now see, you are starting from एक string में, you are starting from the 0th index, ठीक है, I यहाँ से start कर रहे हो और I of course end तक जाएगा, और फिर J कहाँ से हो रहा है, J खुद भी तुम्हारा I से ही start हो रहा है. For every traversals that you're making, suppose I is here, so J will start from here and will go up to the end. Okay, so हर condition में तुम एक particular point को hold करके you are incrementing J and checking उन सब के बीच का palindromes. ठीक है, ये देखो ये 2 pointers है. So L is at I, L is fixed at I. Okay, now J is moving.
So let's have the rightmost point at J. Getting it? And then this is what you are checking कि palindrome है या नहीं. And this is the particular line that checks whether or not it's a palindrome. See, what you are doing is ये left pointer right pointer है यहाँ पे, and then you are checking if these both are equal. What you do is you increment left and you decrement r. ठीक है, और फिर इन दोनों के बीच में चेक करो. ऐसे कर करके तुम अगर सारा कुछ चेक करते हो, सो पैलिंड्रोम का कंडीशन क्या है? लास्ट का पॉइंटर्स मैच करना चाहिए और बीच में जितना है सारा मैच करना चाहिए. So hence you will be getting the longest palindrome. How come longest? Because here you are checking if left is greater than r, that means that this particular sequence from where left and right started is a palindrome. Think, वरना left कभी r को सरपास नहीं करेगा. ऐसा कभी नहीं होगा कि left r को सरपास कर जाए अगर यहाँ पे कुछ एक ब्रेक आ जाएगा. सोचो, तो ये वाला पर्टिकुलर केस तभी होगा if that thing is a palindrome from left to right. Okay. Then you are checking whether rest length is less than j minus I plus 1. Of course, that's the length. If j is here, I is here. So what is the length? J minus I plus 1, because 0 index के according चलता है चीज़ें. So plus 1. And then rest is equals to, ये देखो substring का एक function है ना, that s dot substring. So that starts from I, ends at this particular position, and you are updating this particular thing. ये तुम maximum length update कर रहे हो. ठीक है, right? ताकि अगले बार जब तुम इस पे चेक करोगे तो रेस लेंथ तुमको, अगर मान लो कि तुम्हें एक पर्टिकुलर पैलिंड्रोम मिला जिसका लेंथ है 3, सो नेक्स्ट टाइम इफ यू गेट अ पैलिंड्रोम फ्रॉम ऑफ लेंथ 4, सो you'll have to check this ना कि 3 is less than 4, then only you will be like moving on and changing the substring, and hence in the last part you are just returning the result. I hope this is quite clear. Today is the last class. Yes, Aryan. Okay. Yes, yesterday's last class. Substring Aryan is, uh, as I told, you are given a particular string and you start removing things from this particular string, either from the start or from the end or both. ठीक है? Okay, cool then. So we are done with the brute force approach. Now we are moving on to the next approach. That is what our particular concern for today is. Dynamic programming approach. इसमें एक चेंज आ रहा है कि हम लोग पहले क्या कर रहे थे टैबुलेशन फॉर्मेट में, वी हैड अ डीपी वेक्टर जहाँ पे तुम डीपी को स्टोर कर रहे, मतलब ये चेक कर रहे थे कि प्रीवियसली कैलकुलेटेड कुछ भी हो, सो वी आर स्टोरिंग इट हियर, राइट? यहाँ पे क्या चेंज आएगा, विल सी, वेट, कि वी नो दैट इन अ पैलिंड्रोम वी हैव द स्टार्ट पॉइंटर द एंड पॉइंटर्स, सो यू कॉल इट, अगर एस का आई टू जे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, डिनोट कर रहे हैं. सो इफ दिस इज अ पैलिंड्रोम, so we will be depicting it by dp of I j is equals to, ये यूज करेंगे हम लोग. अभी ये यूज क्यों करेंगे? क्योंकि अगर i टू j हमारा कैलकुलेट करने का है, सो हम लोग इसको मतलब इसके अंदर वाले पार्ट को रिकैलकुलेट नहीं करेंगे. व्हाट डू आई मीन इज, सपोज दिस इज योर i, दिस इज योर पर्टिकुलर j एट अ स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्टार्ट इंडेक्स, ये फाइनल इंडेक्स, और ये कुछ स्ट्रिंग है, ठीक है. So what I am telling is, if I am at a particular position I and I am at a particular position j, like this window is fixed, so I will not be calculating whether or not this I plus 1 and j minus 1, यहाँ से यहाँ तक, whether or not it's a palindrome, ये हम calculate नहीं करेंगे. Why? Because if this is a palindrome and these two matches, you're saying is this and this matches, देन व्हाट इज द आउटकम? अगर बीच का पैलिंड्रोम है और लास्ट का दो इंडेक्स मैच करता है, तो यू आर वेरी श्योर दैट दिस इज आल्सो अ पैलिंड्रोम, राइट? इफ दिस इज अ पैलिंड्रोम, गेटिंग माय पॉइंट. एंड इफ यू आर यू नो दैट यहाँ से यहाँ तक तो पैलिंड्रोम है ही नहीं, तो हम उस पर्टिकुलर विंडो को चेक करके क्या करेंगे, राइट? वहां तो पैलिंड्रोम नहीं हो सकता उस उतना बड़ा विंडो के लिए, ठीक है. सो हमारा मेन मोटिव यही है डीपी यूज करने का कि वी नो
whether dp of I plus 1 j minus 1 is true or not. If it is not true, matlab, then we do not need to check for palindrome. If it is true, we have a condition that arises that string at I is equals to string at j, which means that the whole string is a palindrome, and hence this particular portion is true, palindrome, and then you'll make dp of I and j to be true. ठीक है, समझ रहे हो पूरा फ्लो, समझ रहे हो क्या बोल रहा है? हम नहीं चाहते बार बार ये चेक करना बीच वाला पार्ट। ब्रूट फोर्स में क्या किया, फिक्स करके बार बार चेक किया ना बीच का। इसी से बचने के लिए हम लोग एक ये ले रहे हैं 2D डीपी मैट्रिक्स, ठीक है, राइट। नाउ लेट्स सी हाउ वी विल बी डूइंग इट। देयर आर एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट मी। So okay, this is another thing, this is thing which we did। इसको थोड़ा साइड करते हैं फिलहाल के लिए। ये इस पे बाद में आते हैं। लेट्स फर्स्ट सी कि हम लोग इसको अप्रोच कैसे करेंगे। So how are we doing this? We are, we are having two conditions I और j, ठीक है। अभी I plus 1, what do we need? We need to check dp of I plus 1 or dp of j minus 1, right? So in order to check I plus 1 and j minus 1, we are trying to start from the rightmost part। मतलब क्या होगा कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में यू स्टार्ट I फ्रॉम हियर, ठीक है, और फिर हाँ ऑफकोर्स ये यहाँ तक जाएगा, 0th पोजीशन तक जाएगा इधर, ठीक है। और j को क्या करो कि I जब मूव ऑन करके, मतलब मान लो यहाँ पे रहेगा, तो j क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन से लास्ट पोजीशन तक जाएगा, ठीक है। और तुम इस पर्टिकुलर विंडो में चेक करोगे, तब तक तुमको I प्लस 1 और j माइनस 1 का पता रहेगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? वी नीड टू नो दीज थिंग्स, राइट? I प्लस 1 एंड j माइनस 1। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम द एंड, ठीक है। हम लोग एंड से स्टार्ट करेंगे, दिस इज क्वाइट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज दैट देयर इज अ कैच, कि अगर हमारा अगर सिंगल कैरेक्टर हुआ तो हम क्या बोले, दैट इज अ पैलिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ पे आई और जे करके मतलब नहीं बनता ना, आई जे फिर वहीं रख के तुम चेक करोगे इक्वल टू है या नहीं, ठीक है। टू कैरेक्टर्स होगा मतलब कि समथिंग लाइक दिस ए, और थ्री कैरेक्टर्स होगा मतलब कि समथिंग लाइक दिस ए बी ए। तो यहाँ पे क्या है, ए बी ए में वी हैव अ सेंटर कैरेक्टर बी। यहाँ पे जो सेंटर कैरेक्टर है वो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इन तीनों केसेस के लिए हम लोग बेस कंडीशन सेट कर सकते हैं कि अगर अगर हमारा j माइनस आई प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, राइट, 2 एक्चुअली, 3। मतलब क्या हुआ, तुम एक बार ही देखो, ए बी ए के लिए क्या होगा, ये 0 होगा, एक 0 1 2। सो j is 2 minus 0, it is 2 minus 0 plus 1, what is this? um 1 second, 2 minus 0, हाँ हाँ वेट वेट, ये 2 के लिए सिर्फ हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर ए और ए रहेगा तो वी जस्ट नीड टू चेक कि उसके बगल वाला कैरेक्टर्स, लाइक मेरा ए आई यहाँ है, जे यहाँ है, बट यहाँ पे सिर्फ दो कैरेक्टर्स है ए, ठीक है। तो इफ दिस इज ट्रू देन वी विल बी चेकिंग ओनली दीज कैरेक्टर्स, राइट। एक काम करो, इस थर्ड वाले कंडीशन को इंक्लूड करने के लिए क्या करेंगे कि 2 माइनस 0 प्लस 1, वी कैन मेक इट लेस देन इक्वल्स टू 3, और रादर यू कैन रिमूव 1। मतलब ऐसा कंडीशन होगा तो ये थर्ड वाला कंडीशन इंक्लूड हो जाएगा, राइट। ये 0 1 2 होगा, तो वी टेक दिस कंडीशन, ठीक है, कि अगर j माइनस आई इज लेस देन इक्वल्स टू 2, मतलब ऐसा कुछ हो, या फिर हमारा वो अंदर वाला पार्ट डीपी का करेक्ट हो, तब वी विल बी इंक्रीमेंटिंग थिंग्स, ठीक है।
ओके, सो इफ कंडीशन के अंदर वी हैव टू हैव टू थिंग्स कि j माइनस आई इज लेस देन इक्वल्स टू 2 और दिस पर्टिकुलर थिंग इफ दिस इज ट्रू। ठीक है, अगर ये दोनों केसेस में से कोई एक सा भी केस ट्रू होता है तब वी कैन से कि डीपी ऑफ आई, मतलब इसके साथ ऑफ कोर्स ये वाला चेंज चेक करना होगा कि आई इज इक्वल्स टू जे पे या नहीं, एंड ठीक है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि डीपी ऑफ आई एंड जे इज इक्वल्स टू ट्रू। इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई मीन इज आई और जे पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, मान लो ये दोनों सेम है, तो उसके बाद तुम क्या चेक करोगे कि यहाँ पे दो कैरेक्टर से ज्यादा, दो कैरेक्टर से अगर कम है, तीन कैरेक्टर से रादर, तब वो कंडीशन ट्रू हो जाए। और नहीं तो अगर इसके अंदर का कंडीशन ऑलरेडी ट्रू हो, जो कि हमारे ये डीपी में स्टोर्ड हो, ये दोनों जब एक साथ सेटिस्फाई करे, तब यू कैन से दैट दीज बोथ आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ palindrome, राइट? सो यू आर राइटिंग दैट डीपी ऑफ आई एंड जे इज इक्वल्स टू ट्रू। और फिर तुम वहां पे जो लेंथ वेंथ जो रखे थे हम लोग, this particular thing, no, this will be there also like in the dp case, so you can keep on incrementing that and make it to j minus I plus 1। okay, let's code and then we'll get to know। but ये basic understanding तो समझ में आ रहा है, ये वाला पार्ट कि अंदर वाला पार्ट अगर ट्रू है तो हम लोग बाहर का सिर्फ दो चेक करेंगे और विल मेक इट ट्रू, राइट? ये वाला चीज हम लोग कोड के थ्रू देखते हैं। सो वी आर राइटिंग कि जो हमारा एक n में let this store the size, right? Now we are initializing a 2D वेक्टर, ठीक है, वेक्टर वेक्टर बूल, मतलब इसका क्या है? इसका मतलब है कि जो भी हमारा वेक्टर है दैट इज n क्रॉस n फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और इसमें ऑफ कोर्स वहां पे सारा बूलियन वैल्यूज है। सो दिस इज n विच वी आर राइटिंग इन द फर्स्ट पार्ट वेक्टर, ओके, और ये वाला पार्ट जो है कि उस वेक्टर में है क्या, दैट इज द सेकंड पार्ट। सो वेक्टर ऑफ वेक्टर दैट स्टोर्स boolean, okay, so every line in n is a vector, फाइन, नाम दिया इसको dp। n क्रॉस n कैसे सेट करेंगे? we'll write n comma, now you'll have to mention the type of the yeah, type again, and then you'll have to declare n comma false। so हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं सारा एलिमेंट को false से, okay। now what did we say, that we'll start I from end, right? so int I is equals to n minus 1, I is greater equals to 0, I minus minus, और j को कहाँ से स्टार्ट करोगे, j will start from I, j is less than n, j plus plus, okay। now we are running that particular condition that if s of I is equals to s of j, मतलब कि एंडिंग सारा सेम हो, एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि j माइनस आई इज लेस देन, क्या था, लेस देन इक्वल्स टू 2, और हमारा जो पिछला डीपी में स्टोर्ड कैरेक्टर्स है दैट इज ट्रू। अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे, we'll write that dp of I and j equals to true, ठीक है। अभी sorry I'm on a different keyboard, so yeah, अगर ऐसा कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो हम लोग को वो चेक करना होगा यार, रेस लेंथ लेते हैं वेक्टर को, एंड मेक इट टू इक्वल टू 0, और
वी आर अपडेटिंग इट। अगर ये चेक हुआ दैट इफ res len is smaller than j minus I plus 1, राइट? साइज सही होगा तो तुम क्या करोगे? you'll update res len to be j minus I plus 1 and the index, actually index यहाँ पे एक लेना होगा बिकॉज यहाँ पे अगर तुम देखो ये आई वाला पार्ट जो है, तुमको एक सबस्ट्रिंग के लिए दो चीज लगेंगे ना, स्टार्ट एंड वाला चीज। तो द स्टार्ट इज स्टोर्ड हियर, ठीक है, रेस्ट इंडेक्स इज आई आई एट आई, ठीक है। और ये हो जाने के बाद व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर रिटर्निंग एस स्ट्रिंग का सबस्ट्रिंग, सो सब str start index that's rest in comma rest in. If this is clear, ये एक बेस कंडीशन है, ठीक है, कि अगर ऐसा होता है तो उसको एक कंसिडर करो ट्रू की तरह। ओके, ड्राई रन अगर टाइम बचेगा तो विल सी कि व्हाई वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर थिंग। सी 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 पहले इसको रन करते हैं, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स, उसके बाद विल सी द ड्राई रन पार्ट। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों लो है वो भी उसका एक कारण है, विल डिस्कस दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव दिस पर्टिकुलर थिंग। यू सी, जब हमारे पास एक पूरा सबस्ट्रिंग में सपोज एनीथिंग ए बी ए सी डी टी ए, यहाँ पे एक सी ले लेते हैं। अच्छा अभी रहने दे, ठीक है। तू क्या कर रहा है कि स्टार्ट कर रहा है एंडिंग पॉइंट से, ठीक है, दिस इज योर आई एंड एट द फर्स्ट इटरेशन दिस इज वेयर जे लाइज, ठीक है। सो डू वी नीड टू चेक कि हमारा डीपी में कुछ स्टोर है कि नहीं आई प्लस वन जे माइनस वन के लिए? नहीं, आई प्लस वन तो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, राइट? तो you check of course that is s of I equals to s of j, so a is equals to a, right? And you check j minus I is less than equals to 2, which is 0 in this case. So you are writing that dp of I comma j matlab I and j, I comma j is true, that is I fixed at n minus 1, j fixed at n minus 1 is true। ये पहला केस हुआ। अभी नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा? कलर कलर, नेक्स्ट इटरेशन में तुम्हारा I यहाँ पे होगा, राइट? J भी यहाँ पे ही होगा। So first what you will check is this particular thing, which again for n minus 2, n minus 2, this will turn true. In the next iteration, this will go for this J will become here, come here actually. Okay. अभी तुम I plus 1 J minus 1 क्या चेक करोगे? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तुम तो घूम के इस पे ही जाओगे, ये मिड वाले पोर्शन पे जो हम यहाँ पे बोल रहे थे कि यहाँ पे मिड में कुछ है ही नहीं, तो तुम चेक नहीं कर पाओगे। And hence you need to see that if I, rather if J minus I इज लेस देन इक्वल्स टू 2, बिकॉज इन 3 के केस में भी देखो, जब आई यहाँ पे होगा, जे यहाँ पे होगा, तो तुम जंप करके दोनों एक पॉइंट पे ही आओगे, विच ऑफ कोर्स विल बी ट्रू। तुम अगर बोल रहे हो ये दोनों सेम है और बीच में सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, इज इट नॉट अ पैलिंड्रोम? इट इज ऑफ कोर्स अ पैलिंड्रोम। तो इफ यू गो हियर, इफ यू कम हियर, यू देयर इज नो नीड टू चेक ना आई इज इक्वल्स टू जे, हेंस दिस कंडीशन अराइजेस। अभी तुम चेक करो, यहाँ पे अगर जाते तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जाता, आई प्लस वन जे माइनस वन करके फायदा नहीं है दो कैरेक्टर में, वन कैरेक्टर में आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, और 3 कैरेक्टर्स में भी आई प्लस वन जे प्लस वन करके फायदा नहीं, इफ यू आर चेकिंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन। ओके, क्वाइट क्लियर why we are doing this and hence this particular approach। Okay,
इसमें एक और अप्रोच है, ये क्लियर क्यों नहीं है? Why isn't this clear? Okay, fine. I hope you are able to see this. This is called the two pointer approach. अभी इसमें क्या करते हैं हम लोग? Just to save time, I have written the code. What is the purpose here is you are taking a left pointer, you are taking a right pointer, ठीक है? And for every of this, you are considering कि a particular index I is the center of that particular palindrome. मतलब कि you are considering every element to be a possible center of a palindrome. तो इसमें तुम क्या कराओगे कि तुम इंडेक्स तो ऑफ कोर्स यू सी आई इज इक्वल्स टू जीरो से आई इज लेस देन एस डॉट साइज तक जा रहे हो, मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में इस पर्टिकुलर पोजीशन से एंड तक जाओगे और तुम इसमें एल और आर चेक करते रहोगे. एल इज एट आई एंड आर इज ऑल्सो एट आई इनिशियली. बट वॉट यू डू इज if this thing arises true, you are doing L minus minus R plus plus. ठीक है. Now why odd length और even length के लिए अलग अलग सा क्यों कर रहे हैं वो बताते हैं. देखो कि because अगर हमारे पास odd length का एक palindrome है, please understand this particular thing which I am writing in green. Odd length का palindrome में you always have a center element. ठीक है. A मान लो, you always have a center element. For example, say A B B C B A. So what is the center element? I. मतलब यहाँ पे आई रहेगा और तुम ये इसके लिए चेक करोगे एल माइनस माइनस आर प्लस प्लस, ये वाला पार्ट. ठीक है. बट ये तो हुआ ऑड का कंडीशन. बट तुम जैसे इवन के कंडीशन पे आते हो, सो यू डू नॉट हैव अ सिंगल सेंटर एलिमेंट. ठीक है. इवन के कंडीशन में देयर हैज टू बी टू सेंटर एलिमेंट्स. ठीक है. दिस शुड मैच ऑलवेज. फॉर एग्जांपल ए बी बी ए in order to be a palindrome. So this is I and this is I plus 1 and these both has to match. Have to match actually. Okay. यहाँ पे तुम सिंगल एलिमेंट से काम चला लोगे. सेंटर मतलब पॉसिबल सेंटर तुम एक एलिमेंट को पकड़ के. बट इन दिस पर्टिकुलर केस यू नीड टू हैव टू एलिमेंट्स एज द सेंटर. राइट. हेंस दिस पर्टिकुलर कंडीशन. यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? L is at I, R is at I. But in this particular thing, what you are doing is L is at I, but R is at I plus 1. Okay. And then you of course, this is normal conditions, since तुम L को माइनस माइनस कराओगे, यहाँ से L है यहाँ से आ रहा है. लेफ्ट पीछे जाके चेक कर रहा है कि कहाँ तक का पेलिंड्रोम है मेरा. राइट आगे जाके चेक कर रहा है कि कहाँ तक पेलिंड्रोम है. बेस कंडीशन क्या होगा? लेफ्ट ऑफ कोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. राइट शुड बी लेस देन इक्वल टू एस डॉट साइज. ओके. एंड these both are true. This is the same condition which we are checking here. ये वाला पार्ट देखो, चेक करो, सेम कंडीशन है. और अंदर का चीज भी सेम है. सी रेस एंड इज इक्वल्स टू एल, मतलब स्टार्टिंग और ये एंडिंग, और यू आर रिटेनिंग रेस एंड कॉमा रेस लेंथ. सी. ओके. फाइन. So we are done with these two. Now there is one more condition, like algorithm, which is known as Manish's algorithm. इसको हम लोग लास्ट में देखते हैं. ठीक है. फर्स्ट लेट्स एनालाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. हो रहा है क्या? सो इस ब्रूट फोर्स अप्रोच में बताओ क्या लग रहा होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. इफ यू कैन लाइक say in chat. In this particular brute force algorithm, what's the time complexity? टू लूप्स रनिंग एन स्क्वायर तो यहीं पे हो गया, ये थर्ड वाला. राइट. आई एल इक्वल्स टू आई टू जे से जे तक. सो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन क्यूब है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वी आर नॉट टेकिंग एनी वेक्टर और स्टफ, सो ऑर्डर ऑफ वन. यहाँ पे क्या हो रहा है? ये डीपी वाले पार्ट में दो बार तुम रन कर रहे हो, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टर्न्स आउट टू बी O of n square. Space complexity turns out to be O of n. Okay. Why O of n? Because we are using this. Oh, sorry.
Space complexity can also be n into n, that's n square. Okay. Now in this particular case, we are using two pointers, so our time complexity turns out to be O of n square, right? Because this is the thing that we are running. यहाँ से तुम पीछे और आगे जाके check कर रहे हो. So O of n square. But space complexity यहाँ पे थोड़ा कम है, which is order of n, order of 1 actually. You're not utilizing any space, extra spaces, okay? But why this? Because this solves a question on palindromic subsequence or substring in order of n, okay? ठीक है. और इसका सारा lookups जो होता है, lookups बोले तो कि you are checking कि s of I to j whether or not this is a palindrome, ये तुमको order of 1 पे lookup दे देगा कि हाँ ये palindrome है या ये palindrome नहीं है. ठीक है. If you are understanding this, this is quite useful in understanding Manish's algorithm. Okay, okay. So, okay, we'll be discussing this in the last. Mm. Let's move on to the next question. Palindromic substrings. Okay. So this says that given a string S, return the number of palindromic substrings in it. A string is a palindrome and it treats the same. Okay, okay. We know this. Okay. हाँ. So एक particular string which are given, you need to return the number of palindromic substrings. So A, B, C में क्या है? Of course, I told you that single characters are also considered as palindrome. Hence, we are getting the output as 3 and the palindromes are A, B and C. A के case में you see. So A as single characters are palindromes. So this counts to 3. A is 1. Now the last का A is 2. ठीक है. And A together is 1. So these counts to 3. And hence, you are getting the answer as 6. Fine. Okay. इसका brute force का ये वाला कोड है जो पहले से लिख रखा है, which is quite similar to the previous code. Quite similar नहीं, पूरा ही similar है almost. I ले रहे हो, J ले रहे हो, ठीक है. मतलब हाँ, J यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बट एक स्पैन में एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है. और फिर लेफ्ट पॉइंट को यहाँ सेट कर रहे हो, राइट पॉइंट को यहाँ सेट कर रहे हो, और तुम सारा चेक कर रहे हो कि कितनी बार. इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि ये तभी होगा जब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होगा. L, तो देखो ये वाला कंडीशन चेक कर रहे हो ना, इफ एस ऑफ एल इज इक्वल्स टू एस ऑफ आर. सो हाँ, सो this can only be true incrementing this, decrementing this and checking this particular condition always, and you get something like r यहाँ पे है, l यहाँ पे, मतलब l यहाँ से यहाँ जंप कर गया. ठीक है. ये तभी ट्रू है जब ये पूरा स्ट्रिंग लेफ्ट टू राइट इज अ palindrome. Think, right? And if it is, then you are incrementing result by that particular number of characters. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर का सारा तो पेलिंड्रोम में आ जाएगा. So okay, this is thing. ठीक है, and you are returning the result. Fine. Moving on to, अच्छा ये टू पॉइंटर अप्रोच है, which is the same. See, odd length के लिए you are initializing it with I and I, even के लिए you are initializing with I and I plus 1, and of course you are incrementing s plus plus every time you are getting the um, palindromic substring. Okay, लिख ही देते हैं. Time complexity is the same as we discussed. This condition is particular. Time complexity
ऑर्डर ऑफ n क्यूब होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1। Now our point of interest, that is of course the DP approach. इसका कोई कोड तो नहीं है मेरे पास, but what you can do is copy and paste this particular thing and understand why it's the same. कहाँ कहाँ changes लगेगा, we'll see. Oh, we are told to return the number of, ठीक है, इसको ये बनाया। ये तो रिक्वायरमेंट है ही, ये भी चाहिए because we are checking. Now if this comes to be true, यहाँ पे what you are doing is, रेसलिंग का तो कोई काम ही नहीं है, तो इसको हटाओ, रेस प्लस प्लस, सिर्फ यहाँ पे रिटर्न रेस। थिंक व्हाई इज इट राइट, क्योंकि तुम फॉर एवरी सबस्ट्रिंग, तुम इसमें क्या कर रहे हो, तुम सारा सबस्ट्रिंग चेक कर रहे हो दो पॉइंटर रख के, ठीक है, आई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और तुम जे को जैसे एक्सपैंड करा रहे हो तो हर एक स्ट्रिंग के लिए करा रहे हो, तो सोचो मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे आई है, यहाँ जे है, जे एक्सपैंड होके यहाँ तक इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जाएगा। So you are considering, first of all, you are fixing I, and then you are considering this up to the last point. तो यहाँ से यहाँ तक तुम सारा विंडो कवर किए हो, सोचो। फिर आई नेक्स्ट इटरेशन में यू आर टेलिंग कि आई एक पीछे जाएगा, है ना। फिर तुम जे यहाँ से ही स्टार्ट करोगे, सो दिस एंड ऑल। सो तुम हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए यू आर कंसिडरिंग एवरी सबस्ट्रिंग, और तुम एक ही इंक्रीमेंट क्यों कर रहे हो, बिकॉज if you're getting that this is true and you get to know that यहाँ से यहाँ तक का ट्रू था, यहाँ से यहाँ तक भी ट्रू है, सो कितना इंक्रीमेंट होगा, एक ही तो इंक्रीमेंट होगा, राइट। सो यू आर इंक्रीमेंटिंग इट वंस, लेट्स सी दिस वर्क्स, शुड वर्क ऑफ कोर्स। सेम गोes फॉर द टू पॉइंटर वाला जो बात किया, दिस पर्टिकुलर अप्रोच ऑलमोस्ट द सेम, फाइन। नाउ we can move and understand quite basics of Manisha's algo. We won't be discussing it in very detail cause time limitations, और वो बहुत बड़ा सा कुछ एल्गोरिदम है, बट एक्चुअली हो क्या रहा है वो हम बता सकते हैं कि दिस इज द एल्गो, ओके। एंड एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे कोई भी पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस के लिए, एज अ सबस्ट्रिंग के लिए, इट विल मेक अप एन एरे, ओके, सॉरी, एक एरे बनेगा। क्या होगा उसमें बताते हैं, एक सेकेंड। और जितना भी लुकअप्स है, दैट वेदर और नॉट दीज like s from I to j is a palindrome, so this can all return in once। तो तुम सीधा बोलोगे इसको कि 2 से 5 तक में एक palindrome है या नहीं, this will directly return you whether or not 2 to 5 is a palindrome, okay। Now what this does is it creates an array, ठीक है। अभी तो एक array बना और फिर इसका सारा एलिमेंट क्या करता है, stores the radius of palindrome if available। What do I mean by radius of palindrome? This also considers I as a possible center, a possible center of a palindrome, ठीक है। तो मान लो I यहाँ पे एक पॉसिबल सेंटर है और एक पैलिंड्रोम है, सो कहीं ना कहीं इसके इधर जितना एलिमेंट्स है और इसके इधर जितना एलिमेंट्स है वो सेम होंगे, बट ये कब सेम होंगे, गिवन कि हमारा पैलिंड्रोम ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का है।
देन आई सिंगुलरली कैन बी अ सेंटर, ठीक है, और ये अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, एंड दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर थिंग इज स्टोरिंग, ओके, द रेडियस, वन साइड रेडियस, ठीक है, of the palindrome. Fine. Now see, how are we making every string as an odd substring, as um, the number of characters as odd. So we are doing a pre-processing on string. तो जो तुम इसको स्ट्रिंग देते हो ना, इसको ये प्री प्रोसेस करता है। कैसे करता है कि सारा कैरेक्टर्स के बीच में यू आर पुटिंग अ सिंबल, एनी सिंबल, इट कैन बी एनीथिंग, लाइक हैश, ओके। अभी तुम क्या कर रहे हो कि अगर तुम्हें एक सबस्ट्रिंग दिया है जो कि खुद ही ऑड है, लाइक ए बी ए, सो व्हाट यू टर्न इट इनटू हैश ए हैश बी हैश ए हैश। तुम्हारा अभी ये मॉडिफाइड स्ट्रिंग है, इस पे तुम काम करोगे। जस्ट चेक व्हाट इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7, अगेन ऑड। नाउ सपोज यू आर गिवन even characters a b b a, what is a modified string, hash a hash b hash b hash a hash. Check what's the number of characters here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, again odd. So by doing this you're fixing that जो भी हमारा स्ट्रिंग है that is of odd nature, ठीक है। ये फिक्स करने के बाद you can also have some senitals at the start and end, ठीक है, considerably at the rate and dollar। ये क्या करता है, इसको फिक्स कर देता है एक स्ट्रिंग को कि एट से स्टार्ट हो रहा है, डॉलर पे एंड हो रहा है, ठीक है। हेल्प्स इन ट्रैवर्सल्स एंड यू आर चेकिंग दिस स्टफ। और कैसे चेक करते हो, यू आर डूइंग लाइक वाइल, सपोज यू आर एट एन इंडेक्स आई, ठीक है, ये तुम्हारा सेंटर इंडेक्स है। सो यू आर चेकिंग कि स्ट्रिंग एट आई प्लस, मान लो अभी तुमने चेक किया कि यहाँ से यहाँ तक तो पेलिंड्रोम है, ठीक है। एग्जाम्पल लो, ए बी ए टी टी सी सी, ठीक है, और तुम करेंटली बी पे हो, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हो, सो दिस इज योर आई एंड you have already checked that these are like a part of a palindrome. So हमारा radius क्या है, 1, okay, you are storing radius, right? So what p of I stores currently, that is 1 for this, right? Now you need to check कि हम इसके पीछे जाएंगे और इसके आगे जाएंगे तो क्या आगे भी हमारा palindrome exist कर रहा है। So what are you going to check, that if s of I plus pi, which brings me to this particular index, plus 1 which brings me to this particular index, if this is equals to s of I here minus pi, that brings me here, minus 1, that of course brings me here. If these are true, what you are doing, you are incrementing p of I। मतलब क्या कर रहे हो तुम, एक साइड का रेडियस, y एक साइड का रेडियस बढ़ा रहे हो, तुम सोचो, ताकि हम दोनों साइड सिंगल एरे से ही ट्रैवर्स कर पाएंगे। सोच के देख, अगर यहाँ पे तुम अगर 2 बढ़ा देते हो तो ए कभी रीच नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। इसलिए सिंगल साइड रेडियस, तुम आगे भी जा सकते हो पीछे भी जा सकते हो, एंड यू आर इंक्रीमेंटिंग पी एफ आई, ओके। सो आई थिंक यू आर गेटिंग दी होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस मैनेजर सेल को, है ना। और वाई, बिकॉज ऑफ वाई ऑर्डर ऑफ एन, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज हियर ऑर्डर ऑफ एन, वाई, बिकॉज तुम एक लूप चलाते हो फॉर एवरी आई एन, जहाँ पे साइज ऑफ कोर्स दिस रन्स फॉर अ सिंगल टाइम, ठीक है, ओके। So if you get time, you can see about Mauritius algo, and these are the things that we have currently discussed for today. Fine. And here we are ending the goated DSA grind series. Okay. So एक the end slide. इसके आगे क्या है? इसके आगे बहुत सारा चीज है जो बाकी है करने को,
लाइक बहुत टाइप का है लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो we'll have to practice a lot whatever we have done. Even I have to, be it greedy, DP, heap, anything. We need to practice on lead code or code forces or code chef. Okay, you can try doing these. Next of all, I will suggest you people to follow a sheet in order to not lose track and be on a correct direction कि तुम बार बार मत फंस के रह जाओ एरे में. ठीक है, बार बार शुरू से शुरू ना करना पड़े. बहुत सारे शीट्स है. CP31 है, you have tough, you have neat code, there are lots of sheets. Okay, algo prep, बहुत है. Just find a good one. Any of these is good. Okay, there are lots. Okay, just like hold on to one, complete it, and then move on to another. Okay, how do you try these? Give some time on your own. Then if you are unable to solve, which most of the times you will be unable to solve, तो 15-20 मिनट के बाद just check the solutions. Now not a single solution, इसका different ways होता है. So you need to check on all the ways. ठीक है, and this is how you learn. Like Manish's algo हमको नहीं पता था मेरे को. This is when I got to learn about Manish's algo. Okay, and I need to learn it more, like grasp properly about this particular concept. Okay, so this is how you learn, I guess. Give contests, because this makes you presentable. Okay, just doing problems, you can just copy and paste and do problems, but in contests you're sitting live, helps in your interview and stuff. So if you are in a habit of doing these things, then I guess it will benefit you anyhow. Matlab, even at the end you decide and not do DSA and get into these things, but still you'll have a habit of sitting and doing stuffs, like forcing yourself to do something that you do not want to do, right? Even this GDG, this goated DSA grind series helped me learn a lot because I was forced to sit every alternate day and learn about stuffs. ठीक है, मेरे को भी इतना नहीं पता था चीजें, but since I was forced to do it, I got to know things, right? And I'll see that how do I continue this, because it has helped me, and somehow or the other way I'll try and continue this in somehow. Okay, we'll see how. Because if you have a deadline, if you have a um, pressure to do thing, you do it quite well. So just put yourself in a deadline, force yourself to sit and do stuffs. तुमको अगर कोई बोल दे कि contest देते रहो, you do not have any motivation, you will not do a contest. Find your motivation. Like GDG, this the goated DSA grind was my motivation to do DSA, and I hope this can be yours also. Okay, so that was it, and yeah, thanks to all of you who have joined, who have been through, who have commented, who have like even criticized constructively, and who have messaged me. People like, yeah, this is helping me. This is quite helping me a lot getting into track. So I hope this series helped you because it helped me also. Thanks to GDG HITK for giving me this particular opportunity. Our mentors, Reshma ma'am and Jhalak sir, and the complete department and the college. Everyone, thank you. And we are ending this on a good note. Bye bye. Keep grinding though. Bye.